अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा। आज हम एक डिसीज़ पे बात करेंगे जिसका नाम है सिफिलिस या आतिशक। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्पायरोचिटा ट्रेपोनिमा पेलिडियम। इसमें जो लीजन पाया जाता है ये एक्वायर्ड होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद पर्सन हु हैज़ ओपन प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिटिक लीजन। सिफिलिटिक लीजन जिस पेशेंट में होगा, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, अगर वो ओपन है और उसे कांटेक्ट हुआ तो ये डिसीज़ दूसरे को हो सकती है। ट्रांसमिशन देखेंगे तो इट इज़ थ्रू द एब्रेडेड स्किन और म्यूकस सरफेस। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। इट रेंजेस बिटवीन 9 to 90 days। प्राइमरी लीजन, it is also called chancre. It may be single or multiple, located in the labia. Other sites are forecheek, anus, cervix, nipples. A small papule is formed which quickly erode to form an ulcer. The margins are raised with smooth and shiny floor. The ulcer is painless without any inflammatory reaction. The inguinal glands are enlarged, discrete and painless. Primary lesion or chancre heals spontaneously in 1 to 8 weeks, leaving behind a scar. The tubes are not affected and infertility does not occur unless associated with gonococcal infection. सिफिलिस की वजह से फेलोपियन ट्यूब पे कोई असर नहीं होता और ना ही इनफर्टिलिटी होती है जब तक गोनोकोकल इन्फेक्शन इसके साथ ना हो। इसके बाद आता है सेकेंडरी सिफिलिस। विद इन 6 weeks to 6 months from the onset of primary chancre. Secondary syphilis is evidence in vulva in the form of condyloma lata. अब condyloma lata क्या है देखेंगे। These are coarse, moist, flat-topped necrotic lesion and teeming with treponemas. Figure में you can see this white one is a condyloma lata. Patient may present with systemic symptoms like fever, headache, sore throat, maculopapular lesion seen on palms and sole. Other features are generalized lymphadenopathy, mucosal ulcer, alopecia. The primary and secondary stage lasts for 2 years. During this period, woman is source of infection. Next आता है latent syphilis. This stage occurs after the resolution of second phase. Duration of this phase is less than 2 years or more than 2 years from onset of disease. लेट सिफिलिस गम्मा फॉर्मेशन होता है इसमें। यू कैन सी ऑन द फोर आर्म। टर्शरी स्टेज, about 1/3 of untreated patient progress from latent stage to tertiary syphilis. It is characterized by gammas. It is present anywhere in the body. These are a small soft swelling in connective tissue, in liver, brain, testes and heart. A gummatous ulcer is a deep punched ulcer with rolled out margins. It is painless.
Systemic manifestations are malaise, fever, myalgia, arthralgia, lymphadenopathy, rash. Widespread macular lesions are present. Diagnosis, जिसमें नंबर 1 आता है हिस्ट्री ऑफ exposure to an infected person. Second, identification of organism, Treponema pallidum. Third, serological test, VDRL is positive after 6 weeks of initial infection. Treatment, injection benzathine penicillin G 2.4 million units is given intramuscularly weekly for 3 weeks. Alternative regime में नंबर 1 आता है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg orally BD, और यू कैन गिव tetracycline 500 mg orally 4 times a day for 4 weeks. Thank you.